In this episode of our Rajasthan road trip, you will see our journey from Ujjain and exploration of the Chittorgarh. In case you don't want to see the drive, feel free to jump to the Chittor section directly. Bye Ujjain. We had a great time over here. Especially visiting Mahakaleshwar temple was a wonderful experience. So there are two ways to reach Chittorgarh from Ujjain. One is via Malhargarh and another is via Pratapgarh. So we are going to take the route via Malhargarh because that is shortest. But till Mandsaur, which is 2.5 hours from here, the route is pretty much same. So let's continue. Looks like a Lego car. We are now crossing the famous Chambal river. আমরা কি তবে 𝔾𝕣𝕚 এর পেছনে যাচ্ছি? 𝔾𝕣𝕚 আমার পেছনে আসছে। 𝔾𝕣𝕚 আমাদের পেছনে আসছে। We are on Jauhar Road. Chittorgarh is around 183 kilometers from here. So I was feeling very sleepy, so parked the vehicle and took some power nap for 15 minutes because I don't want to drive while feeling sleepy. Micro sleep is dangerous on highway. So after power nap and having some water, I'm feeling better. So let's continue our journey. So we are now crossing 𝔹𝕒𝕒𝕒𝕒𝕒 toll plaza. So if you see that elevated expressway, that is basically Delhi, Vadodara and Mumbai expressway as it is over there. I think it is part of the National Expressway project which connects Delhi and Mumbai and some other major cities. Exit the roundabout onto Jauhar Road. But we're not going to take that. We will continue on Jauhar Road. Continue on Madhya Pradesh State Highway 17 for 8 kilometers. So it is almost 4 p.m. now and we felt quite hungry. So stop by this nice dhaba near Jauhar. The ambience is really nice just next to the highway. This is actually a good part of having a road trip. You can stop by anywhere, try local food, whatever you like. What is that? Aruhi pakora. Aruhi. Aruhi. Arvi. Aruhi pakora. Arvi pakora. Looks interesting. Much They like said it's speciality of this place. speciality of this place. Okay. This rather looks like some kind of chicken nugget. Okay, let's give it a try. This is actually good with the pudina ki chutney. It tastes even better. So Anindita and Sanjeevani ordered rice, dal and some fries, but I was not feeling like having rice, so I ordered cheese aloo paratha because after eating rice it is very difficult for me to drive. I feel sleepy. So guys, how was the food? It was very nice. It was very authentic, simple, freshly prepared, and the fry was also very nice. Yeah, it was fun trying out the Arvi pakoda, which I'd never had before. Right. Yep, right.
and we are 170 kilometers away from Chittorgarh. It will take 3 hours and 16 minutes. So let's continue our drive. So we have to take a right and meet National Highway 156 rather, sorry, my bad. Continue for 159 kilometers. So friends, we have crossed Mandsaur and we shall continue on NH 156. Chittorgarh is another 213 kilometers from here. It should take 2 hours and 7 minutes as per Google, and we have booked R.T.D.C Panna for next 2 nights. So let's see, let's continue our drive. So far it has been really good. The road is pretty nice over here and I'm able to maintain a decent speed. So I hope you are also enjoying the drive with me. So we are near the MP Rajasthan border. Very soon checkpost will come, and after that we will enter Rajasthan. Yes friends, we have entered Rajasthan, and this is some feeling because we wanted to do this Rajasthan road trip for a long time, and I'm glad that we are finally here. Next 15 days we are going to have blast. We are going to explore Rajasthan by road. We are going to eat lot of food and we are going to have lot of fun. Stay tuned, stay with us, and I'm sure that you will enjoy these episodes as well. Sorry. We have entered Chittorgarh, pretty congested at this time. Our hotel R.T.D.C Panna is another 3 minutes from here. Head west on Station Road toward Chittorgarh, Mangalore Road, Sindhi Road. Panna. But where is the entrance? Here, from here only? R.T.D.C Panna, but it oh, some marriage garden is there. Oh my god. Meera marriage garden. Never seen a government hotel to turn as a marriage garden, but okay, nice. So friends, we reached Chittorgarh and checked into R.T.D.C Panna, which is a government hotel run by Rajasthan Tourism. The room is not very well maintained. There are a lot of scope of improvement, and let me show you the room. So there are 2 beds. This is a non-AC room. They are going to put additional mattress for me. There is a old CRT TV, an air cooler, and the toilet is quite big. So this is the balcony. So there are 2 very big advantages of this hotel. Number 1 is it is at a very prominent location. Just you could see there are a lot of markets. It's a very prime location, and they have got a huge parking, which is quite difficult to find in Rajasthan. Most of the heritage hotels, they don't have parking, but
Here they have ample parking. After dropping our luggages, we explored the area a little bit, had our dinner and called it a day. Next morning we had our complimentary breakfast, which had limited items, and then started our day. ना जी, गाइड ऑलरेडी है. फोर्ट किस तरफ है? इस यहाँ पे. थैंक यू. हाँ, गाइड वहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है. Spread across 13 kilometers, Chittorgarh Fort is the largest in India. In 2014, it was declared as a UNESCO World Heritage Site. All the major attractions are within the fort boundaries and reachable by car. However, during peak time, finding a parking may be an issue. So we have entered the fort, and there are guides everywhere. I don't know whether they are real guides or just localites trying to make some quick buck. We will find the parking, and from there I will try to get a proper trained guide, because without guide it is very difficult to explore these places. I mean, you can just roam around, but you will not understand the significance and other the interesting facts about the forts, because there is so much of history, there is so much of architecture that one needs to understand. Hanuman Pole. This one is Hanuman Pole. These big gates are known as pole in local language. There is plenty of traffic, and it is quite difficult to navigate through such narrow roads, especially with incoming traffic. At many places I had to stop my car at the incline, and this is pretty steep. खंडर है यहाँ, भीड़ भी बहुत ज्यादा रहेगी, गाइड रहेगा वो सारा दिखाया जाएगा. प्रॉब्लम नहीं, हम वहाँ पे बोला हुआ है ऑलरेडी होटल से गाइड. अच्छा, वो है क्या बुक? हाँ. Now there are some conflicting information. People of 𝔹𝕒𝕒𝕣𝕒, they say 𝔹𝕒𝕒𝕒𝕒 is the only living fort in India, and people of Chittorgarh, they say Chittorgarh is the only living fort in India. Maybe both of the places are really living forts. I know for sure 𝔹𝕒𝕒𝕒𝕒 is a living fort, because I have booked my stay in 𝔹𝕒𝕒𝕒𝕒 inside the fort, and we are very excited. I hope you stay by, watch our entire Rajasthan series, and also get to know our experience of staying inside 𝔹𝕒𝕒𝕒𝕒 Fort. Rana Kumbha Palace, nestled within Chittorgarh Fort, epitomizes Rajasthan's regal history. Built by Bappa Rawal in 734 AD and later expanded by Maharana Kumbha, it bears witness to significant events, including birth of Maharana Uday Singh and heroic sacrifices of Panna. Despite its ruins, the palace's grandeur remains evident, reflecting the bravery of Rajput dynasty. It stands as a powerful reminder of Rajasthan's rich heritage and enduring legacy of Rajputs. चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट करने आए हो ना, ये 13 किलोमीटर में फैला हुआ है और 13 किलोमीटर का अपन राउंड करेंगे. इस किले के अंदर में 113 टेंपल बने हुए हैं, 84 पानी के तालाब बना रखे राजाओं ने, 84 वाटर टैंक बनाए थे राजाओं ने. जो मौर्य वंश के लास्ट के शासक थे ना, 𝔹𝕒𝕒𝕒𝕒 मौर्य, उन्होंने इस किले को बनवाया था. Welcome to the majestic Chittorgarh Fort, a testament to the valor and grandeur of Rajasthan. Perched atop a 180-meter hill, this fortress stands as a symbol of resilience and pride. With history dating back to the 7th century, the Chittorgarh Fort has witnessed countless battles and tales of bravery. यहाँ की राजधानी, मेवाड़ की राजधानी पहले चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी. बाद में उदय सिंह जी ने उदयपुर बसा के उसको मेवाड़ की राजधानी बना दिया. अभी मेवाड़ की राजधानी उदयपुर है. तो ये है मेवाड़, और मारवाड़ कौन सा साइड में है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये मारवाड़. Spread over an expansive area of 700 acres, the fort complex is captivating blend of palaces, temples, and various monuments, each echoing to the glory of the bygone era.
From the towering Vijaya Stambha to the serene Kirti Stambha, every structure here narrates a saga of valor and sacrifice. तो उनको ठंडा करने के लिए यहाँ पे अच्छा ये टैंक पानी बना हुआ है। ये भाले वगैरह जो होते थे ना सर जहाँ उदय सिंह जी को बचाया था पन्ना दही ने, अच्छा ये भी वही जगह है। और मीरा बाई जहाँ रहती थी वो भी यही महल है सर। अच्छा ये दोनों जगह आपको यही देखने को मिलेगी। जी ये मीरा बाई की पैलेस है। जी अरे वाह ये क्या है कि सर इसकी कोई रिनोवेट जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट नहीं करती। सामने जो आप टेंपल देख रहे हो ना सर मैडम, यहाँ का सबसे बड़ा टेंपल यही है जो आप सामने देख रहे हो। इसका निर्माण भी 8वीं शताब्दी में बापा रावल ने करवाया था मैडम, जब भगवान विष्णु का टेंपल इन्होंने बनवाया था। तो I would recommend to start the day as early as possible because you will need at least 5 to 7 hours to explore everything inside the fort. Also, wear a good pair of shoes and carry plenty of water as there will be a lot of walking. Rising over 37 meters tall, adorned with intricate carvings and inscriptions, Vijaya Stambha remains a cherished symbol of Chittorgarh's rich heritage. ये यहाँ से एंट्री होती है अंदर, ऐसे स्टार्टिंग इधर से होकर कॉलम के अंदर में सीट। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में यहाँ के राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था, जब उन्होंने गुजरात और मालवा Built को in the एक साथ में 15th century by Maharana Kumbha to commemorate his victory over the combined forces of Malwa and Gujarat, it stands as a symbol of Rajput valor and architectural splendor. ये जो आप गार्डन देख रहे हो ना सर मैडम, ये 50 फीट गहरा खड्डा हुआ करता था। जैसे पानी का टैंक होता है ना सर, वैसे पूरा खड्डा था। ये जितना भी आप गार्डन देख रहे हो ना, ये Jauhar was a mass self-immolation by women and children, was a courageous decision to avoid capture and maintain their freedom and dignity in the face of defeat by invaders. The Jauhar Kund in Chittorgarh Fort Rajasthan is where Rani Padmini and many others bravely chose Jauhar to protect their honor during the wartime. जबकि उस जमाने में पूरा जोर स्थल था। और सर मैडम, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजाओं ने यहाँ पर 84 पानी के तालाब बनाए थे, 84 वाटर टैंक बनाए थे राजाओं ने। सामने जो आप पानी का टैंक देख रहे हो ना सर मैडम जी, ये यहाँ का सबसे पवित्र कुंड माना जाता है। इसका नाम है गौमुख कुंड। वो पानी के अंदर 3 पिलर दिख रहे हैं सर मैडम आपको। वहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग बना हुआ है, पत्थर का गाय का मुंह बना हुआ है। गाय के मुंह से पानी निकल के शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, इसलिए इसको गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन महारानी पद्मिनी का मेला आप सामने देख रहे हो ना सर मैडम, ये वाला है। यहाँ पे वो सिर्फ 4 महीने रहती थी सर मैडम। अच्छा, नाव से जी, अच्छा, नाव से आना जाना करती थी इधर अपने उद्यान में। उसको उद्यान बोला जाता है पद्मिनी का। सैनिक लोग जो अपना परीक्षण करते थे ना सर, तलवारबाजी करना सीखते थे, वो जगह वो। ये यहाँ का सर मैडम मेन गेट है। राजा लोग इधर से एंट्री करते थे। इसका नाम है सूरजपोल गेट। इधर आइए, मैं आपको जान। ग्राउंड है सर, अच्छा, बैटलफील्ड जी। ये सारी जगह में युद्ध हुआ था सर। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, एक पहाड़ नजर आ रहा है आपको सर? हाँ, थोड़ा सा धुंधला है, मौसम के हिसाब से ऐसे दिखेगा। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, इसके पीछे मेन पहाड़ बना हुआ है। अच्छा, जो अरावली पर्वतमाला बोली जाती है सर। पूरे राजस्थान में ये देखने को मिलेगी आपको।
शिव टेम्पल आने वाला है, लेकिन मुगलों ने मंदिर का जो टॉप होता है उसको तोड़ दिया। इनका नाम है अद्भुत नाथ। ये भगवान शिव का टेम्पल है। जो आपने समाधीश्वर टेम्पल देखा ना सर मैडम, सेम वैसे ही टेम्पल है ये। Rising over 22 meters tall, adorned with intricate Jain sculptures and carvings, 𝔾𝕣𝕗 symbolizes devotion and cultural richness. Constructed in the 12th century by a Jain merchant, it stands as a testament of Jain architecture and spirituality. We could not visit it as we were rushing to see the sunset, but I would strongly recommend to you not to miss it. Fateh Prakash Palace was built by Maharana Fateh Singh during the late 19th century to serve as a royal residence and symbol of wealth and power of the Mewar dynasty. This architectural marvel now houses a museum showcasing a diverse collection of artifacts that narrates the rich history and culture of Chittorgarh and its illustrious rulers. Visitors can explore galleries displaying Rajput weaponry, intricate sculptures, historical manuscripts, and vibrant paintings depicting Rajput life. With its rich collection and regal ambience, the museum offers a captivating glimpse into Rajasthan's heritage. I would suggest to start your Chittorgarh Fort trip with this museum. This will provide good information and context that will help you to understand the attractions in a better way. So we did a whole day exploration of Chittorgarh Fort. It was a very good experience, but the trip is not over yet because we shall wait for the sunset, and after that we want to see the light and sound show. But before that we stopped by Barbarik restaurant to grab something because we didn't have lunch today. So let's go inside, eat something, and then we'll proceed towards the viewpoint for seeing the sunset. We had a very good food at the Barbarik restaurant. Ordered authentic dal bati churma, which turned out to be very good. Plus some Mewar paneer and rice. Everything was very good. Also the cold coffee was nice. And now we are rushing towards the sunset viewpoint to see the sunset. And after that we wish to buy tickets for the light and sound show. But there is heavy traffic over there. Some really crazy traffic. We missed the sunset. We have come back again near Kumbha Palace because the light and sound show happens over here. Anindita and Sanjeevani have gone to buy the tickets. So we are going inside to see the light and sound show. So during winter, since the day is short, it starts from 6:30. Otherwise, the normal timing is 7 p.m. और सन 734 में इन सामंतों ने राजा मान की जगह काल भोज को चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठा दिया। एक लिंग के दीवान के साथ साथ काल भोज
अब बप्पा रावल भी कहलाने लगा। गुरु महाराज बप्पा रावल की जय, चक्रवर्ती महाराज बप्पा रावल की जय। बप्पा रावल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और मेवाड़ को हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित कर दिया। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो। 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने की योजना बनाई। लेकिन चित्तौड़ को जीतना इतना आसान न था। सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो रावल साहब को और ले चलो हमारी छावनी में। गोरा और बादल ने इसी चाल से काम लेकर रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया। अलाउद्दीन की फौज रतन सिंह का पीछा करते करते किले के सिंह द्वार तक आ पहुंची। रानी पद्मिनी ने किले की सारी औरतों के साथ जौहर रचाया। रावल रतन सिंह और उनके रणबांकुरे युद्ध में छेद रहे और अलाउद्दीन के हाथ किले की राख के सिवा और कुछ भी न आया। राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ को एक बार फिर अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ा। अंततः राणा कुंभा का एक ऐसा वंशज चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा जो न केवल मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध होने वाला था, बल्कि उत्तर भारत के सभी राजाओं और सुल्तानों में भी अपने बाहुबल का सिक्का जमाने वाला था। इस प्रतापी राज्येश्वर का नाम था संग्राम सिंह, जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही राणा सांगा ने अपने राज्य को संगठित करना शुरू कर दिया। खनवा के मैदान पर राणा सांगा बाबर का मुकाबला करने आ पहुंचे। खनवा की लड़ाई में उन्होंने बाबर की ताकत को ऐसी चोट पहुंचाई कि फतह के बावजूद वो मेवाड़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ा पाया। जिन दिनों मेवाड़ में तलवारों की झंकार और वीरों की हुंकार सुनाई देती थी, उन्हीं दिनों लड़ाई और मार काट के कोलाहल को चीरती हुई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसके स्वर आज भी भारत के कोने कोने में गूंज रहे हैं। नौशुदा खां, किले के अंदर ये कैसी रोशनी हो रही है? हुजूर, ये लगते जौहर। जौहर? जब राजपूत मरने मारने का पक्का इरादा कर लेते हैं तो औरतों और बच्चों को आग के हवाले करके केसरिया बाना पहन लड़ाई में टूट जाते हैं। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोल दिए गए और राजपूतों ने अकबर की फौज पर हल्ला बोल दिया। आखिरकार सब रणबांकुरे लड़ते लड़ते मौत के घाट उतर गए और 25 फरवरी 1568 को किले पर अकबर का कब्जा हो गया। वहां चारों तरफ शमशान का सदृश्य था। मरे हुए सैनिक और जौहर की चिताओं की राख सब जगह बिखरी हुई थी। किले को जीतने में अकबर को 4 महीने लग गए थे।
We just came out of the light and sound show, and it was awesome experience. Whenever you are visiting Chittorgarh Fort, don't miss it. And with this, we are ending our episode here. Today was our last day at Chittorgarh. Tomorrow we are heading towards Ajmer and Pushkar. I hope you have enjoyed this episode with us. If so, give it a like. Don't forget to comment and don't forget to subscribe to our channel. Until we meet again, stay safe and stay happy.